वअशरकतिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा वअशरकतिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा वअशरकतिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा वअशरकतिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा वअशरकतिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। या अली मदद नेवीन साहिबा। मौला अली मदद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। या अली मदद। मौला अली मदद। हम मौला के मुबारक नाम से इस सेशन का आगाज करते हैं। कुछ तस्बीह से आगाज करेंगे आप प्लीज। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-वदूद 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 अल-वदूद। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत नवाजिश तमाम साथियों को एक बार फिर या अली मदद। मौला अली मदद। नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम, हाजिर इमाम, हाजिर इमाम। या मौला मेहरबान मदद फरमा। अलीयुल कय्यूम अली अल्लाह मदद फरमा। या मौला तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी मौला, तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी मौला। या मौला मदद फरमा, या मौला मदद फरमा। आज हम फरमान नंबर 39 कलाम इमाम मुबीन से कंटिन्यू करेंगे। हमने आखिरी लाइन जो अपने पिछले सेशन में पढ़ी थी, जिसमें इमाम पीर सदरुद्दीन के तरीकाए टीचिंग को बयान फरमाते हैं कि किस तरह से जब पीर ईरान से और दूसरे अरब मुल्कों से इंडिया में तशरीफ लाए तो उन्होंने पहले उनके लोकल मजहब को, उनके तरीकों को, उनके तौर और तरीकों को तमाम को सीख कर इसके बाद उन्होंने उनको उन्हीं के मजहब के अंदर जो अच्छाइयाँ होती थी उनको लेते हुए उनको तालीम दी और फिर उनको हमारा तरीका सिखाया।
आज देखें कि हम अगर किसी क्रिश्चियन के साथ, किसी यहूदी के साथ या किसी और नॉन इस्माइली मुसलमान के साथ डिस्कस करते हैं तो हम किस तरह से, कौन से प्लेटफॉर्म पर खड़े रहकर उनसे बात करेंगे। हम उनसे अपने तरीके के अंदर के जो राइट्स एंड रिचुअल्स है और जो गिनान है और जो फरमान है, जो हमारा जमात खाने के अंदर बैठने का तरीका है, उनसे हम बहस नहीं कर सकेंगे। क्यों? कि उनको इनके बारे में, इन चीजों के बारे में कोई इल्म नहीं है। At the end of our last session, we were reading the last line in which Imam gives us this example of our peers, and especially Peer Sadruddin, how when he came to Indo-Pak, first initially he learned the religion and the tariqa, the rites and rituals, the way of the people that were living in their area, and then he taught them, gave them the advice on the Batini religion by comparing. If he had not have any knowledge of their doing, he would not have a platform to stand on or nothing to compare with. We cannot speak to others outside the Ismaili tariqa, may those be non-Ismaili Muslims within the Ummah or others like Christian and Jewish. If we do not understand their tariqa, their religion, their way of doing things, because we would not have any platform to stand, nor we would have anything to compare with. How would you compare our tariqa to their tariqa? Further, Mullah says in this Farman that how we will not be able to use our Ginan and our interpretation as they would not understand what you are saying, because our Ginan, our rites and rituals, our Faramin are only for us and they would not know anything about it. तो मौला फरमाते हैं जो शरीयती मुसलमान हमारे दीन में ना हो, अगर उनको हमारे गिनान के मानी सुनाओगे तो वो तस्लीम नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सामने वो मजाक भी करेंगे, क्योंकि इन लोगों को हमारे दीन पर इत्काद नहीं है। अगर ऐसे लोगों को फौरन ही हमारे दीन के मानी सुनाओगे तो वो कबूल नहीं करेंगे, बल्कि वो हमें बेवकूफ समझेंगे। Now, how do we understand this Farman in today's time within this group? How do we understand that? If someone comes in front of you and start talking about the Ruhaniyat, then
we would not be able to understand unless he is able to show you from within our tariqah or whatever shariat that we understand. Let's take a couple of examples, because today we do not, or we hardly ever go and talk to others outside our tariqah. अगर हमको इस मिसाल को आज के दिन हमारे इस छोटे से ग्रुप के अंदर समझना है तो हम इसको कैसे समझेंगे? अगर आपके सामने कोई आकर अचानक से रूहानियत की बातें करने लग जाए तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर कोई होशियार टीचर हुआ तो वो क्या करेगा? वो आपके उन शरीयतों को, उन राइट्स और रिचुअल को, उन बातों को जो हम समझते हैं उसको लेते हुए उसके अंदर से आपको बातीन सिखाएगा। वरना वो हमारे लिए भी इतना ही मुश्किल होगा जितना बार वालों के लिए। Otherwise it would be as hard for us to understand as it would be for others from outside. And the example would be, okay, what is the batin of Ismaili tariqa? So a teacher would do what? He will talk about our shariat, our rites and ritual. And then from our rites and rituals, from our ginan, from our dua, from our tasbiyat, from our faramin, he will teach. And he will show the batin within those rites and ritual, which are the physical and the shariat of our tariqah. In this Farman, Mullah talks about other Muslims. And we do get in trouble sometime not understanding this portion. And when we go outside the Ismaili tariqah, within our friendship circle, where we have Sunni, Shia, Bori, and other Muslims that we interact with, and whenever they're having a religion discussion, we jump in and we start to talk about how good our tariqah, and when they say how so, we start to talk about our ginan and our farman and our rites and ritual. And they look at you like you are from some other world. And sometimes they will mock you because they would have no idea, because none of that would make any logic or sense to them, as that is not the shariat that other Muslim, other than Ismaili Muslims, have adopted. The shariat that we have is due to the constant dynamically moving with the Imam over the 1400 years. But imagine someone who lost the guidance very early on at the time of Mullah Ali, or time of Imam Ismail, or time of Imam Mustansibullah, or time of other Imams. They're still standing at that point. 1400 years back, 1000 years back, 600 years back. They lost all the time. They would not know what you're talking about. It would be a doctor explaining some disease or some medicine to a child. How would child would understand the terms and terminologies a doctor is using
to explain a disease, a sickness or a medicine. आपने देखा कि अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारे लिए ये मुश्किल होगा और वो हमारी मजाक उड़ाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मौला हमें समझाते हैं इसी फरमान के अंदर। ऊपर के पैराग्राफ में भी मौला ने हमें समझाया और नीचे के पैराग्राफ में भी। ये वो फरमान है जहां पर ना सिर्फ मौला हमें हमारे अंदर जो कमी कोताही है इल्म के हिसाब से, यकीन इत्तेकाद के हिसाब से कोई मसला नहीं है। We have no problem in believing our iman is solid. What Imam is drawing our attention toward is the lack of knowledge. And the knowledge that we have is limited to our Shariat, our rites and ritual. And we have no platform to stand on. So Mola is teaching us like children and drawing our attention toward our tariqah. And if you notice, this is 120-year-old Farman. Even after 120 years, this Farman is still as valid as it was back then. आपने ध्यान दिया कि ये फरमान 120 साल पुराना है, लेकिन आज भी इतना ही रेलेवेंट है, हम पर इतना ही लागू पड़ता है जितना 120 साल पहले पड़ता था। उस जमाने में भी हमारे पास ऐसे लोग नहीं थे और बहुत ही अफसोस के साथ अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं। देखिए मौला क्या फरमाते हैं, तुम अपने लोगों में से ऐसे लोग तलाश करो जो फरमान माफी जो कुरान शरीफ और उसके मानी जानते हो। आपने ध्यान दिया कि जो कुरान शरीफ और उसके मानी जानते हो। You should look for those amongst yourself, the people not who only know Quran but know the meaning of it, have a good understanding of it. Hazrat Imam in his current Jama tells us that whenever, if you read Quran, the words of the Quran must present a concept to you. Again, हमारे खुद के टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए हम दुआ के अंदर कुरान की 2 सूरा 5 आयतें पढ़ते हैं। क्या कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ रहा है जब हम सूरह अल-हम्द पढ़ते हैं, सूरह इखलास पढ़ते हैं? कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ रहा होता है? आपने देखा कि हाजिर जो मैंने भी यही फरमाया कि इट मस्ट प्रेजेंट अ कॉन्सेप्ट टू यू। अगर नहीं आ रहा है तो आप देखें ये 120 साल पुराना फरमान, यहां पर भी यही लिखा हुआ है कि तुम अपने लोगों में से ऐसे लोग तलाश करो जो कुरान शरीफ और उसके मानी जानते हो, तो हम उनको हमारे मजहब की हर एक तफसील कुरान शरीफ में से बताएंगे। कुरान शरीफ में से 10 जगहों बल्कि उससे भी ज्यादा जगहों पर साबित करके बताएंगे तुम लोग कुरान शरीफ नहीं जानते, और जो जानते हैं, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, और जो जानते हैं वो भी तोते की तरह पढ़ लेते हैं, उसमें क्या फायदा? Mullah said, if you had knowledge of the Quran,
I would show you 10 or more places in Quran. What would he show us in the Quran? Those of you who have read the Quran, would you be able to find 10 to 12 places where word Imam is written in the Quran? Would you be able to find Imam in the Quran? Would you be able to find the word Nur in Quran? How many times Nur is mentioned in Quran? How many times word Hadi is mentioned in Quran? How many times that Imam is Hazir and Mawjood, Al Hayyul Qayyum, or the ever living, ever present is mentioned in Quran? There are so many of us who have read Quran, but are we the one who are reading and repeating the Quran like a parrot? Or are we the one who has little bit of the knowledge of the Quran? Imam is not asking us to be Hafiz the Quran. What does he want us to be? Ashik Quran. आप तमाम को ये शेर याद है कि हाफिज कुरान नहीं मैं आशिक कुरान हूं. हाफिज कुरान नहीं मैं आशिक कुरान हूं. आया कुर्सी में मुझको जुमला कुरान याद है. ये कॉल हमारे जमाने के आरिफ कामिल का है. आप देखें कि किस तरह से कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हमको हाफिज कुरान बनना है, बल्कि हमारे पास कुरान की कुछ सूझ बुझ हो ताकि हम इसको पढ़कर समझ सके और जब वक्त आए तो हम इसको प्लेटफॉर्म बनाकर उस पे से बात कर सकें. मौला आखिर में फरमाते हैं आगे, तुम अंग्रेजी हरूफ जानते हो, लेकिन अगर अंग्रेजी जबान ना जानते हो और किसी अंग्रेज ऑफिसर के पास किसी काम से जाओ तो तुम्हें कुछ हासिल ना होगा, लेकिन अगर अंग्रेजी जबान में होशियार होगे तो काम होगा. Imam is giving us an example of English language. Remember, this Farman was in India, and at that time the English, British were ruling the India. So some of us had the little bit understanding of English words, but not of the language. Just like that, we have the little bit understanding of Quran and the words, but not the meaning of the Quran. Just like that, we have a little bit understanding of our rites and ritual, but not the understanding of our rites and ritual. आपने ये मिसाल सुनी कि मौला ने क्या फरमाया कि हमारे पास अगर किसी चीज की कुछ पहचान हो, अल्फाज हमको आते हो, लेकिन उसके माने नहीं जानते हो, उसके ऊपर कमांड ना हो, तो फिर हम उसको नहीं समझ पाएंगे और ना ही किसी को समझा पाएंगे. This is not about English language, but an example that if we do not have the total understanding of our tariqah, and if we do not have the command or understanding of the Quran, which is the platform of the Muslim Ummah, because we do not understand, we will not be able to explain and make them understand what you are saying. ये यहाँ पर एग्जाम्पल है. आगे चलते हैं.
इसी तरह तुम में से बहुत से लोग कुरान शरीफ पढ़ना जानते हैं लेकिन उसके मानी नहीं समझते हैं. I would like to take this one half line to draw our attention. Remember, we are reading this Farman to learn something. We are not reading this Farman just for the sake of reading. Otherwise, you do not need me. If you can read Urdu or English, you can read this Farman on your own. We have gathered here to understand what Imam is teaching us. How is he guiding us? I want to come back to this one word again, the Shariati. Imam used this word, Shariati. Who are Shariati? We look at other Muslims outside Ismaili Tariqa, and normally we call them Ahle Shariat, people of the Shariat. हम जब दूसरे नॉन इस्माइली मुस्लिम की बात करते हैं तो हम अक्सर क्या कहते हैं कि वो अहले शरीयत है, वो शरीयत को पालते हैं. कभी हमने अपनी तरफ देखा? Have we ever paid attention to ourselves? Ask question. Remember, that's how we learn, when we ask question. And this question is to ourselves. ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है. ना तो मुझे बताने की जरूरत है, ना आपको किसी और को बताने की जरूरत है. आप अपने आप से सवाल पूछें. हम एक ऐसे तरीके के अंदर हैं जो बातीन का तरीका है. हम इस्लाम के बातीनी तरीके में हैं. लेकिन क्या बातीन हम समझ रहे हैं हमारे मजहब के अंदर? We are part of the batin of Islam. What batin are we understanding in our तरीका? अगर हम सिर्फ 3 टाइम दुआ पढ़ते हैं तो वो लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, वो उनकी शरीयत है, ये हमारी शरीयत है. हम कौन सी ऐसी चीज कर रहे हैं जो वो नहीं कर रहे हैं? वो भी शरीयत को पालते हैं, हम भी शरीयत को पालते हैं. हम दसों डालते हैं, वो ज़कात डालते हैं, ठीक है. जो उनकी समझ में आता है वो इस तरह से ज़कात डालते हैं, जो हमारी समझ में आता है वो हम इस तरह से दसों डालते हैं. वो भी एक शरीयत को पालते हैं, हमने भी एक शरीयत को पाली हुई है. उनके यहाँ भी अक्सर मजालिस होती है, ठीक है. हमारे यहाँ मजालिस अलग नाम से होती है. हमने कौन सी ऐसी चीज की जो हमको उनसे अलग और बातीनी बनाती है? What makes us batini if we are only following the Shariat? Not only we are only following Shariat, matter of fact, we do not even sometime, most of the time, understand the batin of the Shariat we are following. For example, sometimes we don't know the meaning of the dua, the meaning of the tasbiyat, the meaning of the chanta, the niyaz, the dua karani, the nandi, the hai zinda, the Jamaat Khana, the meaning of the Jamaat Khana. Then what is the difference between us and them? जबकि हम अपने आप को कहते हैं कि हम इस्लाम का बातीनी तरीका है. इसी तरह से हम दुआ पढ़ते हैं और दुआ के अंदर जो कुरान की आयतें पढ़ते हैं उसके मानी नहीं जानते हैं. वो भी कुरान पढ़ते हैं और उनके मानी नहीं समझते हैं. हम भी दुआ पढ़ते हैं, उसके मानी नहीं समझते हैं. तो फिर क्या फर्क है हमारे में? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूं
ताकि हम इन बातों को अच्छी तरह से समझकर आज के बाद जो माजी में हो गया सो हो गया, इमाम के फरमान के मुताबिक हमको क्या करना चाहिए। वी मस्ट understand the batin of the parts of the Quran that at least we are reading. No one is asking us to be Hafiz al-Quran. So मौला फरमाते हैं कि इसी तरह से तुम में से बहुत से लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं लेकिन इसके मायने नहीं जानते हैं. And I speak to a lot of people from this group and outside this group and within the Jamaat. They will proudly will tell you that when I was 7-year-old, when I was 9-year-old, I read the Quran. All right. So do you know the meaning of it? Oh no, I just read the Quran. Oh, I can beautifully recite the dua. Do you know the meaning of the dua? No, no. My pronunciation is perfect. I can beautifully recite the dua. But when it comes to the mani, the batin, we don't know. What Imam is saying? Imam is not asking you to become Hafiz al-Quran, but understand the meaning of it. Again, let's come back to this paragraph. इसी तरह तुम में से बहुत से लोग कुरान शरीफ पढ़ना जानते हैं लेकिन उसके मानी नहीं समझते हैं. वो सब ऊपर दी गई मिसाल के मुजिब है. मतलब समझने के बिगर पढ़ना बेकार है. मतलब समझे बिगर पढ़ना बेकार है. In our dua book, if you have that dua book, the printed dua book, look at the two Farman of Mola Bapa in the first page. What does Mola Bapa say? I don't want my spiritual children to recite the dua without knowing the meaning of it. अगर आप दुआ की किताब को खोल कर देखेंगे तो पहले ही पेज पे मौला बाबा के दो फरमान है. मौला बाबा क्या फरमाते हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे रूहानी बच्चे दुआ पढ़े उसके मानी जाने बिगर. आपको ये फरमान और उस फरमान में कोई फर्क नजर आ रहा है? वो ये फरमान 120 साल पुराना है, वो फरमान शायद 25-30 साल पुराना है. एक ही फरमान 100 साल के बाद आज भी मौला फरमा रहे हैं. वही फरमान आज भी मौला हमको समझा रहे हैं. मौला के फरमाते हैं अगर दूसरे कौम वालों को हमारे दीन में लाना हो तो पहले उसके दीन से बराबर वाकिफ होना जरूरी है. इसके बाद हमारा दीन उनके दीन के साथ मिलाकर बताना चाहिए, तभी वो कबूल करेंगे और उसको यकीन आएगा. We are not going out to do any dawat. We are not out to bring other people into our tariqah. But initially we must learn our own tariqah and the meaning of our tariqah. So if ever we are in discussion with others, they will not mock you. They will say, oh my God, you are actually the true Muslim. You have followed the Islam the way it was intended. Because Islam was intended to be the follow the way that we are following. But the issue and the problem in hand is that we ourselves don't understand what we have. मसला ये नहीं है कि हम सच्चे दीन पर है कि नहीं. मसला ये है कि हम इस सच्चे दीन के बातीन को नहीं समझ रहे हैं. जब हम अपने मजहब को समझेंगे और फिर जब हम उनसे बात करेंगे तो वो आपकी बात को सुनेंगे भी और आपकी बात को समझेंगे भी और वो शायद ये भी कहेंगे कि हाँ आपका तरीका हकीकत में इस्लाम का सही और बातीनी तरीका है. आखिरी पैराग्राफ पढ़ के हम आज के सेशन को खत्म करेंगे.
हमारे दीन की साबिती चाहिए तो यहूदी, नसारा, सुन्नी और सारी मुस्लिम अक़वाम में से हम तुम्हें हमारा दीन साबित करके दिखाएंगे. Now this line, Mullah says, do you want to know the faith, the trueness within our tariqah? Then Imam said, I can show you the true religion amongst all the religion. Amongst all the religion. How would Imam do that? Look at Hazrat Imam. How is Imam presenting our tariqah of Islam in the front of the world today? How many times have you noticed Imam presenting Ginan or Farman to the world? In just about every single speech in recent history, in recent years, what does Imam give reference to? हम इमाम को फॉलो करते हैं ना, तो हमको इमाम के नक्शे कदम पर चलना चाहिए. Because we are following the Imam Zaman, should we not be following on his footstep? What reference does Imam give in every single speech, may it be in Europe, Australia, Asia, or Americas, Africa? He uses and gives reference from the Quran. He proved to the world and other Muslims outside Ismaili Tariqah openly that our Imam is the true Imam, Ale Nabi, Aulade Ali. He is the direct progeny of Prophet Muhammad and Mullah Ali. He is the Imam Barhaq. Mullah अपने आप को डिक्लेयर करते हैं और रेफरेंसेस कुरान के देते हैं और बताते हैं कि किस तरह से वो आले नबी औलाद अली और इमाम बरहक है मुस्लिम्स के, इस्माइली तरीके के. कौन से प्लेटफॉर्म पर खड़े रहकर? कुरान के प्लेटफॉर्म पर खड़े रहकर. जिस तरह से ऊपर फरमाया गया कि अगर आपको 10-12 जगह पर देखना हो कुरान में इमाम को साबित करने के लिए, तो क्या आप कर सकेंगे? क्या आप इमाम के अल्फाजों को, इमाम के वर्ड को कुरान से ढूंढ सकेंगे? स्पेशली मैं उनसे खिताब कर रहा हूं कि जो कहते हैं कि हमने कुरान पढ़ा है. कैन यू फाइंड द इमाम फ्रॉम कुरान? And would you be able to prove the Imam Barhaq from the Quran? If your answer is yes, Mubarak to you. If your answer is no, then it shows us that we are reading the Quran but not understanding the Quran. आगे चलते हैं. मौला फरमाते हैं, little bit harsh word, इंशाल्लाह, तुम में से कितने भगत हैं जो गधे की मानिंद है. I'm so sorry to be using this word, but this is the words that Imam has used. I would not dare use this word, but Imam wants to jolt us. He wanted to wake us up. He wants to tell us that don't be just, don't call yourself a good Ismaili, a Bhagat, and then don't know anything about our deen. How many times some of you have called or has asked question and have said, so and so missionary, so and so told me this and that,
and you understood that he or she had no idea what our tariqa is. Look at this again. तुम में से कितने भगत है जो गधे की मानिंद है, क्योंकि जो हमारा दीन में नहीं है वो उनको भी गिनानों के मानी समझाने लग जाते हैं. Do you know anyone like that? That uses the Gnan and Farman and our rites and rituals to prove and show others our tariqah? Because they have no other knowledge. They don't have any batini knowledge of our tariqah. Matter of fact, when they are using our Gnan, they have no understanding of Gnan. When they're using our Farman, they have no understanding of Farman. Because they have nothing to compare with. मुला के फरमाते हैं वो उसको कबूल नहीं करते क्योंकि उनको हमारे दीन और गिनान पर यकीन नहीं है. Because this Gnan and Farman and rites and ritual is for us. It is not for them. Why are we even talking about our Gnan, Farman, rites and rituals outside our tariqah? They have nothing to do with it. And why are we talking about their rites and rituals? We have nothing to do with it. So what do we have? One thing in common. If we are talking to other Ismaili, non-Ismaili Muslims, Quran. Even within the Ismaili tariqa, if you go outside the Indo-Pak Khoja Jamaat, the Syrian Jamaat, the Tajiki Jamaat, the Afghani Jamaat, they would not know anything about our Gujarati Gnan. So what do we have common with them? Then we have to talk about the Imam. We have one in common. We have to talk about the Faramin. We have in common. And then we have the Quran in common. So even within our tariqa, we see sometime Gnan would not be good enough because they would not know anything about our Khoja tradition or Khoja language Gnan. As we would not know much about their Qasida. Unless you learn the Qasida and they learn the Gnan, then now you have something in common. क्योंकि उनको हमारे दीन और गिनान पर यकीन नहीं, ऐसे लोग गिनान की बातें किस तरह कबूल करेंगे. लेकिन अगर उनको कुरान, हदीस और जो किताब वो मानते हैं उसमें से नसीहत करें और उसके बाद हमारे दीन उनके दीन के साथ मिलाकर कंपेयर करके मुआवजा करके बताएं तो उसके मानी इन लोगों पर असर करेंगे. So what do we have in common with them? Quran, Ahadith, and other religion book like, for example, Wajh Deen, common book like Kokobeduri, common books that they have and we have. Then we will be able to compare their tariqa to our tariqa and their religion to our religion. So if even now, if we are talking to Christian, how will we compare? We would have to compare the Bible to the Quran, correct? Because they have no idea about the Quran either. Then we have to have the understanding of Christian tariqa and their Bible if you want to compare. Otherwise, no one is asking us to go out and teach or compare, but at least for ourselves, at least हमारे खुद के लिए हम कर सकते हैं कि हम इमाम के फरमान पर चलते हुए, don't do it because Aziz sir said it, do it because imams want you to learn.
Imam wants you to learn. And no one is asking you to become Hafiz al-Quran. You do not have to read the entire Quran. Just find the Imam in the Quran. At least know that much. Find the Imam in the Quran. Inshallah, we will continue with this Farman. This Farman is long. We will continue next week. I will stop here and we can open the floor for the comments or question. Ji. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. शुक्रान लिल्लाह व हम्दुलिल्लाह. सर, हमारे पास यहाँ पर एक सवाल है. Ji. Should we be reading all religions books or Quran? Let's look at the Farman again. Quran, Hadith, and other books. Now, having said that, what other religion book are we speaking of? I don't want to give you an open trump card because we should be reading all of the book. Matter of fact, Imam has said, read the book which are teaching and related to our tariqa first. हमारे तरीके की जो किताबें हैं पहले उसको पढ़ लें. For example, again, वजह दीन, Kokabeduri. Those are books, and I'm just talking about 2 books, but we are talking about hundreds of books of our tariqa. Within this book, when you start to read, you will see that these books are of our tariqa also talks about the Shariat, Sarair, talk about all of the religion of the world. Qasusul Anbiya, the memoirs of Aga Khan. There are so many books that will talk about our tariqa and other religions and other tariqas. So yes, we should be reading religion book, but not those books which teach you and take you away from our tariqa. क्योंकि दुश्मनान दीन ने भी बहुत सारी किताबें लिखी है हमारे मजहब के खिलाफ. अगर आप उन किताबों को पढ़ेंगे तो आपका ईमान खराब हो जाएगा क्योंकि हमारे मजहब की पूरी जानकारी नहीं है. So if you read those books which are written by people against the Imam and against our tariqa, then those books will take your faith away from you. Why? Because we do not have initially understanding of our own tariqa. Once we have understanding of our own tariqa and you are firm with knowledge, not just with the iman, firm with the knowledge, then you can read whatever you like. And so you will be able to compare. Ji. Subhanallah, Subhanallah, sir. सर, ये सवाल बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहें तो. What are your thoughts of people recording and releasing ginans on YouTube and other media which they cannot revoke? Very good question. अच्छा सवाल है. ये सवाल पहले भी पूछा गया है और this is just my humble opinion. ये सिर्फ नाचीज का एक ख्याल है. आप फिर आगे सोचें. What is the purpose of placing dua, ginan, farman, and other rites and rituals of our tariqa on YouTube? So you have to look at the intent, the purpose behind it. If purpose was to show others our tariqa, then answer is no, that is not right. If purpose is to help other Ismailis who are not able to read or write,
who are not able to reach the Jamaat Khana, who doesn't have access to this material, then the intent is correct, and why not? We have nothing to hide. Do you see? Purpose क्या है उसके पीछे, intent क्या है उसके पीछे? So the question needs to start from there. What is the intent by posting those things on YouTube? Ji. Subhanallah, Subhanallah. Or friends, if you have any questions, please unmute and come forward. साथियों के पास अगर कोई सवाल है तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं सर से. अच्छा, यहाँ पर एक व्हाट्सएप के ऊपर सवाल आया है, मैं उसको देख लेता हूँ. जब तक अगर किसी को सवाल हो तो पूछ लेना. Our sister is asking about the dua and the dua meaning. Okay, so I believe her question is about the translation, that we are only given the translation of the dua in the book that we have available to us. There is a huge difference. दुआ की मीनिंग और दुआ के ट्रांसलेशन में जमीन और आसमान का फर्क है. I believe this question is almost similar question that we have spoken on in our last Sunday class. The translation of the dua and the translation of the Quran is not the meaning of the dua, nor is the meaning of the Quran. Translation तो सिर्फ आपको बताता है कि ये अरबिक वर्ड के क्या ट्रांसलेशन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, ये तो सिर्फ ट्रांसलेशन है अरबिक का. सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, ये तो ट्रांसलेशन है. दिस इज नॉट द मीनिंग. दुआ के मीनिंग हमें सीखने हैं, हमें समझने हैं कि दुआ में हम क्या बोल रहे हैं. आपको दुआ के अंदर और दुआ के अंदर जो स्पेशली कुरानिक आयत है, दुआ के अंदर जो दुआ है, फॉर एग्जाम्पल अल्लाहुम्मा या मौलाना अंत सलाम व मिनका सलाम, ये जो दुआ है उसके मीनिंग क्या है वो सीखना है, वो समझना है. मौला ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहे हैं. आप सोचें कि इस फरमान को आप ले जाएं किसी सीरियन जो अरबिक जबान को जानते हैं, उसको कहें कि मौला का फरमान है कि आप दुआ का ट्रांसलेशन पढ़ें. He will laugh at you, क्योंकि वो तो अरबिक पढ़ने वाला है, वो तो अरबिक जानता है, तो ये फरमान फिर क्या काम आएगा उसके. लेकिन अगर आप उसको कहेंगे कि आप दुआ के मीनिंग बातीन को पढ़ें, or he will say that is the correct farman of my imam for me and you. उसको भी दुआ के मानी समझने हैं, आपको भी दुआ के मानी समझने हैं, regardless of the language. आप चाहे काठियावाड़ी है, सिंधी है, पंजाबी है, पश्तून है, पर्शियन बोलने वाले हैं, अरबिक बोलने वाले हैं, मौला का ये फरमान तमाम पर लागू होता है कि आप दुआ के मानी सीखें, मानी को समझें, बातीन को समझें. I hope this answers your question. Thank you. Subhanallah, Subhanallah. Sir, यहाँ पे एक और question है. Please explain the zikr what was done this morning before the class started. So, फेरियल साहिबा ने 2 जिक्र कराए थे, वो अशरकतिल अर्जु बिनूरी रब्बिहा और अलवदूद. सुभानअल्लाह. पहला जिक्र जो है सूरह ज़ुमर से, कि
खुदा प्रॉमिस करता है कि मैं एक दिन जमीन को अपने नूर से मुनव्वर कर दूंगा। दिस इज अ प्रॉमिस कि मेरे नूर से जमीन मुनव्वर हो जाएंगी। अब ये तो सिर्फ एक ट्रांसलेशन या एक अंडरस्टैंडिंग हो गया, ये तो एक ट्रांसलेशन हो गया। उसके मीनिंग क्या है? क्योंकि रोजाना सूरज निकलता है, हम देखते हैं कि जमीन जो है वो रोशन हो जाती है। जब भी जमीन अपना रुख सूरज की तरफ करती है तो रोशन हो जाती है। लेकिन खुदा कहते हैं नहीं, उस दिन, कौन से दिन? उस दिन मैं अपने नूर से जमीन को मुनव्वर कर दूंगा। तो यहां पर मीनिंग की बात हो रही है। कौन से नूर से? खुदावन ताला इमाम के नूर से। कौन से दिन? उस दिन जब आप अपनी जमीन का मुंह, अभी आपकी जमीन कौन सी? आपके आलम शख्सी, आपका चेहरा जब आप घुमा देंगे इमाम की तरफ, जिस तरह से जमीन जब मुड़ कर सूरज की तरफ आती है तो सूरज जमीन को अपने नूर से रोशन कर देता है, इस तरह से जब हम उस दिन, उस दिन का मतलब क़यामत भी होता है, लेकिन उस दिन जब आप अपना चेहरा और अपना आलम शख्सी, अपनी जमीन को इमाम के नूर की तरफ कर देंगे तो इमाम आपके आलम शख्सी, पर्सनल वर्ल्ड में अपने नूर से आपकी जमीन को रोशन कर देगा। ये उस दिन की बात है जब आपके लिए इमाम का नूर उजागर हो जाएगा। आपके ऊपर इमाम के नूर की रोशनी पड़ेगी, आपको इमाम के नूर का दीदार होगा। आपके ऊपर इमाम का नूर इसी तरह से रोशन होगा जिस तरह से सूरज जमीन पर रोजाना सुबह को रोशन होता है। दूसरी तस्वीर थी अलवदूद। अलवदूद के दो मायने हैं। पहले सिंपल माने, बहुत ज्यादा प्यार करने वाला, the one who loves you a lot। लेकिन अलवदूद के दो मायने हैं कि आप भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। It's a conditional that when you love him, he loves you more. When you love him more, he loves you even more. Matter of fact, he is the best of the one who can love you. He is your आशिक and माशुक। जो उर्दू समझने वाले हैं, इमाम आपका आशिक भी है and आपका माशुक भी है। So when you love him, he loves you. When you love him more, he loves you even more, and he is al-wadud। सुभान अल्लाह जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर, अगर वो अशरकतिल अर्जू का अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश में बता सके, साथियों की गुजारिश है जी। So this ayah says that on that day the earth will be lightened by my nur. So the question was, what nur, what day, and which earth? Because this physical earth that we live on becomes lighted with the light of the sun every morning, or whenever the earth turns toward the sun shines and gives the light to the earth. So what is the meaning of this ayat? What does it mean? That how would this earth will become lighted on what day? So three things. On that day. The day also stands for the day of Qiyamah, but more than that,
the day that you will turn your face, your faith, your world, your earth, the alam shaksi, the personal world, toward the Imam Zaman, on that day, the day that Imam will give you his nur, the day that Imam will give you his didar, the day that Imam will shine on your personal world, on your earth, on your zameen, the way the sun shines on this physical world, the nur of the Imam will shine in your personal world, on your zameen, on that day. This is the promise of Allah, promise of the Imam for the Mu'mineen, that there will be a day when his nur will shine in your personal world. This is the promise of the Imam. So what is the condition? The same condition. When earth turns towards the sun, what does sun do? Shines on the earth, gives its light and heat. So what is the condition? When we turn our face toward him, when we are ready to accept his nur, he will shine in your personal world with his nur on your zameen, on your earth, in you on that day. And now this day is conditional and it is individual. It's not collective. It's individual. Your day could be different than my day because you could turn your face toward him today and I may turn my face toward him tomorrow. These days are individual. Ji. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर, बहुत ही रिलेटेड सवाल है, आपने थोड़ा सा उसको टच किया है ऑलरेडी। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज पर्सनल वर्ल्ड? इट हैज बीन यूज्ड सो मेनी टाइम्स बट रियली डोंट अंडरस्टैंड। जी, हमारी जो जाहिरी दुनिया है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश एंड उर्दू कंबाइनली। हमारी जो जाहिरी दुनिया है, ये दुनिया जो हम बाहर देखते हैं, द फिजिकल वर्ल्ड, जस्ट लाइक दिस फिजिकल वर्ल्ड, we have a world within ourselves, and that is called the personal world, आलम शख्सी। उर्दू के अंदर आलम शख्सी, हमारे गिनानों के अंदर आपको हमारा बातीन, एक हमारा जाहिर है, एक हमारा बातीन है जो हमारे अंदर है। मौला अली फरमाते हैं कि तुम क्या अपने आप को एक छोटी सी दुनिया समझते हो जबकि तुम्हारे अंदर पूरी कायनात समोई हुई है। Do you see yourself as a small world when the entire universe is within you? जिस तरह से हमारे बाहर एक ज़ाहिरी दुनिया है एग्जाम्पल के तौर पर, इसी तरह से हमारे अंदर भी एक पूरी दुनिया है और हमारे अंदर की दुनिया में इसी तरह से तमाम लोग भी हैं। लोग किस तरह से हैं? ज़ाहिरी फॉर्म में नहीं, रूहानी फॉर्म में, क्योंकि हमारी बातीन, हमारा आलम शख्सी, our personal world is the batin of the human. There can be 2 or 3 questions. Does everyone has alam shakhsi? Potentially, yes. Living, maybe not. Even though all of us have a batin, but it could be sleeping, unconscious, unknown to us. हालांकि हम तमाम के अंदर एक बातीन है, लेकिन वो सकता है कि अभी तक हमने उसको जगाया नहीं है, हमने अभी तक उसको उस तरह से नहीं देखा, नहीं समझा जिस तरह से समझना चाहिए था।
उस जमीन के ऊपर चूंकि अभी तक इमाम के नूर की रोशनी नहीं है तो वो अंधेरे में है और हमको नजर नहीं आता है, बिकॉज आवर पर्सनल वर्ल्ड डज नॉट हैव द लाइट of the nur of the Imam. It is in darkness, is cold, frozen, unseen, unknown, ununderstandable. But as we turn our face, our belief toward the Imam and Imam's nur, the closer we will go to the Imam and Imam's nur, the lighter our personal world, our batin, in easy language, our आलम शख्सी जो हमारे अंदर है वो नजर आएगा, रोशन होगा, उजागर होगा, और आप उसके अंदर उतर कर याद रखें कि इमाम का बातिनी दीदार आपके अंदर है। अब आपके आलम शख्सी में, चूंकि आपने सवाल इतना अच्छा पूछ लिया है, तो उसके लिए एक और बात मैं इसके अंदर ऐड करते चले जाता हूं कि आपके आलम शख्सी के अंदर भी